Okay, so now I have started the recording and once again formally welcome you everyone in the second session. And this session is not introduction to, this session is not foundation of English, this is introduction to linguistics. Okay, can you just remind me that what topic did we study, what topic we studied in the last class in foundation of English? All right. We discussed the functions of language. Okay, assonance, functions of language, pleasure functions, function, fatigue function. Yes, yes, macro functions, alliterations. Very nice. So you remember that, and you are writing down in the chat box. I'm glad. So बेटा हमने दो questions कर लिए. देखिए, I tell you, your linguistic paper will be both objective. I mean, I will give you some. If the midterm paper is of 25 marks, so I will give you 10 multiple choice questions, okay? And I will formulate a list of multiple choice questions and will send them to you. ठीक है? So that you can prepare from them. Secondly, your questions will be descriptive. So the first topic that we did in Introduction to Linguistics was about what is a language and what are the characteristics of language. So this is your question number one that we have done. In the previous class, we did function of language. What are basically what are the functions of language? We studied the micro function of language, and there were seven functions of language, including communication function, reasoning function, recording function, fatigue function, pleasure function. ठीक है? So in the previous class हमने उसको डिस्कस किया था. तो आपके कितने क्वेश्चन प्रिपेयर हो गए लिंग्विस्टिक्स के लिए बेटा? आपके दो क्वेश्चंस प्रिपेयर हो गए. Plus, I will share you the screenshots. I will take the pictures from the book that I have and I will share with you. ठीक है? मैं आपसे एक पीडीएफ और एक फाइल आपसे शेयर कर लूंगी ताकि आप उसमें से कर लें. तो आपके कितने क्वेश्चंस रेडी हो चुके हैं इंट्रोडक्शन टू लिंग्विस्टिक्स के लिए? 2 क्वेश्चंस. वेरी नाइस. टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स. ऑल राइट, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स हम पढ़ेंगे. आज का जो हमारा सवाल होगा व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स, और अगला जो उससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन है, linguistics define how linguistics can be, how linguistics can be called scientific. Why is the study of language is called scientific study? ठीक है? तो ये हमने दो सवाल आज हमने, this is one question. Describe linguistics and its it is a scientific approach. Okay, so what is linguistics and why it is called the scientific study of language? I mean, what is the science? हम उसको scientific में क्यों कहते हैं? लेकिन आप science के students तो नहीं हैं. If we are teaching you introduction to linguistics, and those who study linguistics, they are not, their major is not like science. वो MSc नहीं कहलाएंगे ना? All right, this is the subject that you study in humanities. Okay, so humanities के subjects कौन से होते हैं? Arts, जैसे जो सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी पढ़ते हैं, दे आर ह्यूमैनिटीज सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के. अब जो लिंग्विस्टिक्स है, इट इज लैंग्वेज. अब लैंग्वेज को आप कहाँ प्लेस करेंगे? इट इज अ साइंस एज वेल एज इट मे नॉट बी अ साइंस. क्लियर? तो उसको आज हम डिस्कस करेंगे. सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू एंड देन वी विल कम टू दिस. So this is our main topic today. Okay, previously we have studied about language and we have studied about the characteristics of language. हमने language और characteristics of language को पढ़ लिया है. We have also studied the function of language. Okay, and today we are starting with introduction to linguistics. That what is linguistics? If I ask you what is linguistics, what you should be writing? I mean, what you should be saying? Can you please write in the chat box? क्या ज़हन में आता है आपके जब आप सुनते हैं? That linguistics is, it is a scientific study of language. Saliha, excellent. It is the scientific study of language. Very simple definition that it is the scientific study of language. And this is the sort of communication, yes. Okay, let's go ahead. Now, linguistics can be defined
as the scientific or systematic study of language. It is science in the sense that it is scientifically studies the rules, systems, and principles of human languages. Now, there are some terms that I want you to focus on: the scientific or systematic study of language, and it is it studies the principles of human languages. ठीक है? I will go to further description and explanation, but after some slides. Let me show you some of the slides that are, wait, okay. Now, when we talk about linguistics, linguistics has two main parts. First one is that it studies the nature of language and tries to establish a theory of language and describes language in the light of the theory established. And the other is that it examines all the forms of language in general, and seeks a scientific understanding of the ways in which it is organized to fulfill the needs it serves and functions it performs in human life. ठीक है? अच्छा, अब इससे आपको क्या समझ में आता है? If it has two purposes, what do you think that, अच्छा, if I ask you that what are the parts and what are the approaches and the levels of linguistics study? Okay. चलें, मैं आपसे एक सवाल करती हूँ, ठीक है? And the question is, if you take admission in a language center, you want to learn a language, ठीक है? आप कोई भी language सीखना चाहते हैं, be it English or Chinese or French. And if you take admission in the language center where this language is taught, आप उसमें क्या पढ़ेंगे? Can you please tell me? Okay, the study of nature, structure, variation, how to speak and how to read. Suraya, excellent. Okay, so when you want to learn a language, you will essentially learn its four skills like reading, writing, listening, speaking, as well as you will learn the rules of language. For instance, that you will learn the tenses, you will learn the parts of the speech, you will learn, it's like, it's the main lexical terms and vocabulary that exist in that language. Exactly, you are right. Okay. Now, when we talk about linguistics, in linguistics, we have certain levels of study that is called morphology, that is called semantics, that is called syntax, that is called phonology. All right. So, जो आपकी linguistics study होती है, it is a very different study. और जब आप एक language learning कर रहे होते हैं, it is a different thing. I'll give you an example. Look at this. This is a wonderful example for you to understand that what is the difference between learning a language and learning about a language. When we say, why study linguistics? It means when we learn how to drive a car, we learn a set of habits and do some practice. This is similar to learning how to speak a language. देखिए बेटा, जब आप कोई ज़बान सीखना चाहते हैं ना, चाहे वो आप इंग्लिश सीख रहे हो, चाहे वो आप चाइनीज़ सीख रहे हो, फ्रेंच सीख रहे हो या जापानीज़, ओके? आप एक लैंग्वेज को सीखते हैं। यू आर लर्निंग अ लैंग्वेज, लाइक हाउ टू स्पीक इन दैट लैंग्वेज, ओके? इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हेन दिस लैंग्वेज इज स्पोकन इन फ्रंट ऑफ यू, तो आपकी लिसनिंग है या नहीं है, ऑलराइट? और आर यू एबल टू रीड इन दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज? अगर आपके सामने कोई चीज़ रिटन रिटन में आती है, तो क्या आप उसको पढ़ सकते हैं या नहीं पढ़ सकते हैं? और क्या आप उस लैंग्वेज में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? अब चाइनीज़ है, जापानीज़ है, फ्रेंच है, इनके रिटन डायलेक्ट्स भी हैं, ठीक है? इनको बोला भी जाता है इनके कंट्रीज़ में। सो दिस इज़ अ लैंग्वेज एंड लर्निंग अ लैंग्वेज। जैसे अरेबिक है, ओके? वी ऑल हैव स्टडीड अरेबिक, बट नॉट in its literal sense, but at least we know that how to read Arabic because we read Holy Quran. Clear? Or maybe if you have any other languages or you know any other languages or you may have studied any any books in those languages that may be related to your religion or whatever, so you know how to, yes, okay, Iman says that she knows how to speak Arabic. That's great. Okay. Now, how linguistics is different than learning a language? Linguistics जो है वो कैसे different है एक language learning से? So this example is very apt example and very appropriate, that when we learn how a car works, we open up and study its mechanism and investigate the relationship of its part to one another. Okay. Uh,
and some students can speak Persian. That's great. Thank you so much for telling me this. All right. Okay, इसको हम एक बार फिर इसको मैं आपको रिफ्रेश करके एक्सप्लेन करती हूँ that you know how to drive a car and you are driving for an hour and suddenly your car breaks down. ठीक है, आप 1 घंटे से ड्राइविंग कर रहे हैं, आपको बहुत अच्छी ड्राइविंग आती है, लेकिन अचानक से आपकी कार जो है वो रुक जाती है बिकॉज इट स्टॉप्स वर्किंग. ठीक है, अच्छा, when your car stops working, what will you do? You will check out that what is the problem. All right, what is the problem with the car? अच्छा, अब ये मुझे बताइए कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब आपकी कार खराब हो गई है, हु विल यू नीड टू कॉल? आपकी कार को ठीक कौन करेगा? मैकेनिक. ओके, ठीक है. अच्छा, व्हाई मैकेनिक विल डू दैट? बिकॉज मैकेनिक हैज स्टडीड द पार्ट्स, द स्ट्रक्चर, द कंपोनेंट्स, ओके, एंड द फंक्शनिंग ऑफ द कार. उसने कार का पूरा स्ट्रक्चर, उसके स्पेयर पार्ट्स, उन पार्ट्स की फंक्शनिंग, हाउ वेल दे आर कनेक्टेड, कौन सा पार्ट किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सा पार्ट फंक्शनल है, कौन सा पार्ट फंक्शनल हो गया जिसकी वजह से आपकी कार स्टॉप हो गई. तो ये सब तो आप नहीं कर सकते ना. यू कैन बी अ वेरी गुड ड्राइवर. ठीक है, यू कैन बी अ वेरी गुड ड्राइवर, आपको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है, लेकिन आप कार तो ठीक नहीं कर सकते. क्लियर हो गया? सो दिस इज अ ग्रेट डिफरेंस. दिस इज अ वेरी ग्रेट डिफरेंस टू अंडरस्टैंड कि जब आप लैंग्वेजेस को सीख रहे होते हैं, सो यू आर लर्निंग द लैंग्वेज टू यूज इट फॉर योर सोशल नीड्स. आप कम्युनिकेशन पर्पसेस के लिए सीखते हैं. आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक लिंग्विस्ट क्या करता है? एक लिंग्विस्ट जो करता है, और साइंटिफिक स्टडी ऑफ लिंग्विस्टिक्स क्या करती है, वो लैंग्वेजेस का को डाइसेक्ट करती है. वो लैंग्वेजेस के एक एक पार्ट को, एक एक कंपोनेंट को, एक एक लेटर को, एक एक वर्ड को, उसके एक एक मीनिंग को, उसके एक एक कॉम्पोजिशन को स्टडी करती है. उसकी प्रेजेंट को, प्रेजेंट में उसके उस लैंग्वेज की क्या चेंजेस आई हैं उसके अंदर, पास्ट में, लाइक ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, व्हाट वाज द लैंग्वेज इन पास्ट, हाउ द लैंग्वेज हैज इवॉल्व्ड, हाउ द लैंग्वेज हैज डेवलप्ड. उस जबान के अंदर क्या चेंजेस आई हैं, वो जबान पहले कैसी होती थी, अब कैसी है. क्लियर? तो यू सी कि कितनी डीप स्टडी इन्वॉल्व है इसके अंदर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर. क्लियर? अगर मैं एक अगर मुझे सिर्फ इंग्लिश बोलनी है, और आई एम नॉट इंग्लिश स्टूडेंट लाइक अ लॉट ऑफ पीपल हु बिलोंग टू अदर फील्ड्स, अगर कोई कॉमर्स में है, कोई किसी कंपनी का सीईओ है, और राइट, कोई डॉक्टर है, दे ऑल कैन स्पीक इन इंग्लिश. इंग्लिश में तो कोई भी बात कर सकता है, इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है, ठीक है. लेकिन लेकिन the only one who has studied linguistics, only a linguist will be able to know about the language, you know. See, ये जो linguistics की definition में क्या आ रहा है, learning about a language, उस जबान के बारे में पढ़ना. Okay, like a random person who speaks good English doesn't have to bother about like के English में past में क्या था, फ्यूचर में क्या है, कौन कौन सी जबान के वर्ड्स उसके अंदर आए हैं, और राइट, पहले कौन से वर्ड्स एग्जिस्ट करते थे, कौन से वर्ड्स एग्जिस्ट नहीं करते थे, वर्ड्स जो है उनके रूट्स क्या हैं, कौन से वर्ड्स जो है वो लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं, इनफिक्सेस क्या है, सफिक्सेस क्या है, प्रीफिक्सेस क्या है, वर्ड्स कैसे बनते हैं, सेंटेंसेस कैसे बनते हैं. ठीक है, और प्लस ओके, अच्छा, उससे भी बढ़कर, उससे ऊपर ह्यूमन लैंग्वेजेस, हाउ ह्यूमन बीइंग्स एक्वायर एंड एक्वायर लैंग्वेज. लैंग्वेज एक्विजिशन कैसे होती है, बच्चा कैसे लैंग्वेज सीखता है, आपका ब्रेन कैसे काम करता है, आपके ब्रेन के कौन से पार्ट्स जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस लैंग्वेज को सीखने के, ऑल राइट, लैंग्वेज को कॉम्प्रीहेंड करने के, लैंग्वेज को समझने के, और फिर उस लैंग्वेज को प्रोड्यूस करने के. Right? So, I mean, a normal person doesn't need to study all that. So that is why it is called a scientific study, because उसके अंदर हम लैंग्वेज के एक एक कंपोनेंट को, एक एक पार्ट को, उसके हिस्टोरिकल, उसके प्रेजेंट चेंजेस, उसका एवोल्यूशन, हम सबको स्टडी करते हैं. क्लियर हो गया? आई होप यहाँ तक क्लियर है सबको. ठीक है. नाउ नेक्स्ट. ऑलराइट, अब हम ये देखते हैं, दिस इज सिमिलर टू व्हाट वी डू अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अ लैंग्वेज और लिंग्विस्टिक्स. We investigate the mechanism of language, its parts, how well all parts fit together to perform particular functions, and why they are arranged and organized in a certain manner. So this is the same thing that I've just said, कि कैसे सारे जो वर्ड्स हैं वो एक दूसरे के साथ वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेल कनेक्टेड हैं, उनके अरेंजमेंट्स जो हैं वो क्यों इस तरीके से हैं.
तो हम ये स्टडी करते हैं. ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू बी bilingual so that many of you can understand. Challenging. I have a question from you. What do we call a person who is a linguist? I'm writing a question in the chat box. Who is a linguist? एक linguist कौन होता है? Okay, any ideas? Okay, oh, all right. अच्छा, what do we call a person who can speak many languages? What do we call a person who speaks many languages? Okay, अगर कोई शख्स बहुत सारी जबानें बोलता है, like you may speak 2, 3, 4 languages, okay, और I can speak 3 languages, okay, तो हम उसको क्या कहें? Okay, so a linguist is a person who knows the mechanism of the language. All right, this is Inshra is saying a person who knows many languages and can speak many languages is called a polyglot. Okay, Ghulam Fiza is saying polyglot. Okay, 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 okay. So you are right. A person who can speak many languages is not called a linguist. A person who can speak many languages is called a polyglot. So girls and guys, please note down that this can be one of the questions in your paper. Okay. Now, what is a linguist? Just common perception. A linguist is someone who just knows many languages or can teach many languages. All right, this is a misconception. It is not true. A person who knows many languages or can speak many languages is called a polyglot. A linguist is someone who just knows a lot about, who knows a lot of or lots of big words. That is also a misconception. If a person who has a very good English or any languages, he has got command, he has good vocabulary. All right, it doesn't mean that he is a linguist. Okay, तो ये टर्म आपको याद रखनी है. Now, the next. Can you please tell me what does a linguist do? So if we come to define that who is a linguist, okay, so how will we define? Just look at these options, some on your screen. What do you think? How will you define a linguist? A person who studies lots of different languages, or studies how children learn language, or studies conversations, or studies speech sounds, or studies language structure. Who do you call a linguist? Okay, a person who does the scientific study of languages or who knows the mechanism of a language. Fine. Who studies speech and sounds. Nazir, you are right. Nayyar is saying again, study the scientific, every component. Okay, speech sound. बेटा ये स्क्रीन से देख के मुझे बताइए that एक लिंग्विस्ट आप किसको कहेंगे? Okay, let me just check. Studies language structure. Okay, studies a lot of different languages. Okay, a linguist can know many languages or cannot know many languages. ठीक है, जब हम एक लिंग्विस्ट की बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि एक लिंग्विस्ट जो उसको बहुत सारी जबानें आती हैं, वो किसी एक जबान पे भी रिसर्च करता है जो उसको आती है. That's it. Okay, so all these options on your screen, they are correct. Okay, they can go with they can define a linguist. A linguist studies lots of different languages. A linguist studies how children learn language. Okay, and a linguist studies conversation. A linguist studies speech sounds, and a linguist studies language structure. So these all are the functions that a linguist perform. Okay. 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 Now, I hope polyglot and linguist difference is clear. Okay. Yeah. Now we are going to study, 1 or 2 definitions, okay, so that you have a very authentic definitions to define what linguistics is. Let me admit, okay. So linguistics is concerned with the nature of human language
how it is learned, and what part it plays in the life of the individuals and the community. This definition is given by Stephen Pitt Corder, okay, and he says that it is definitely it is language is basically the part of human. It is a trait of human beings, right? Human beings can speak a language, not animals. So this is human quality. And the most popular and simple definition that you all should know is the scientific study of human language is called linguistics. Okay, चलेंगे. अब हम आते हैं linguistics as a science. Okay, so students, please write down why is it why do we say that linguistics is a science? All right, can you tell me what is science? How will you define science? Yes, what is science? Okay, because it is science, we study each and every part. All right. Okay. Okay. Mm-hmm. So if I say that, if you were if you were a student of science, like you have studied science at any levels, what do you do? Like, yes, observation and experiment. I wanted to come to that. I wanted somebody to tell me that. Okay. So what do you do basically? Scientific study में हम क्या करते हैं? हम observe करते हैं, हम experiment करते हैं, हम hypothesis form करते हैं. Excellent, excellent. All right. So these are the great responses that you are giving me. Okay. Now, why do we call linguistics a science? Because when we talk about linguistics, okay, wait a minute, please. Okay, so, when we talk about language, okay, we have clearly understood the difference between learning a language and learning about a language. Now, how does this science applies to this? Acha, by the way, it is very clear that languages and that you will study because your BS, English is your BS major, all right? आप सब इंग्लिश डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो साइंस के डिसिप्लिन में नहीं आता, ठीक है? वो आता है ह्यूमैनिटीज के डिसिप्लिन में. तो अगर लिंग्विस्टिक्स साइंटिफिक स्टडी है, तो व्हाई इज इट नॉट कंसीडर्ड अ साइंटिफिक सब्जेक्ट? ये भी एक क्वेश्चन है, ये भी एक सवाल है, ठीक है? So let's talk about it because you see that when we talk about linguistics as a scientific study of language is a very simple definition. Uh, first of all, why it is science? When we talk about it is science, it doesn't mean that you need a lab coat or you need to go into the lab and you perform some experiments as we do in our regular science classes. All right. It means that it is the way we ask questions to learn about language uses a scientific approach. तो जब हम लैंग्वेज को स्टडी करते हैं so उसकी जो अप्रोचेस होती हैं लाइक सम ऑफ यू हैव मेंशन्ड ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंटेशन hypothesis, all right, its mechanism, its relationship with other parts, with other components. So these are all sort of the scientific procedures जो एक साइंस के एक्सपेरिमेंट में होते हैं वही लिंग्विस्टिक्स के एक्सपेरिमेंट में होते हैं. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड scientific study. Acha. Now, another thing that it uses the scientific way of thinking about language, and it involves systematic and empirical observations. What is empirical observations? अगर आप empirical का word देखें तो empirical का मतलब होता है look at this, it is empirical and objective. So why it is empirical? Empirical का मतलब होता है we observe data to find the evidence of theories. Clear? Again, empirical means based on observation and experiences. All right. So what do the scientists do? They make observations. Like as you can see on my screen, there is an example कि अगर हम एक botanist को देखें तो वो क्या करता है? वो observe करता है how plants grow and reproduce. What does a chemist do? A chemist क्या करता है? Like a chemist observes how substances interact with each other, how chemicals when they combine, all right, how they react, वो chemical reactions को observe करता है. So that is why we can say that linguists observe how people use their language. You understand that? जिस तरह से biology में आपके पास specimen होते हैं, you go, you look at each and every part of the animal that you want to study, और फिर आप उसके उसके उसके
उसके डिफरेंट पार्ट्स को आप सेपरेटली स्टडी करते हैं, ऑलराइट, यू एनालाइज। सिमिलरली व्हाट डज अ केमिस्ट डू, व्हाट डज अ फिजिसिस्ट डू? एक फिजिक्स को स्टडी करने वाला मैटर को, उसके नेचर के अंदर होने वाली चीजों को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस गोज द सेम व्हेन वी स्टडी द लैंग्वेजेस or linguistics. Okay. Now, the most important thing that you should keep in mind that observations we make about language does not mean कि हम judge करें. Okay. देखिए, language is a personal and human activity. Okay. People speak languages, but what they speak, you don't have any rights to judge them. अब linguist क्या करते हैं? They actually, like, there are lots of people in the world, all right, and people, you study a lot of things. Okay. So people, for example, if they are writing in the newspaper or maybe they speak, in their day-to-day life, you can, you make judgments about how people use language. Okay, up sometimes, some people, if they are using any, what if they have got any accent or they're any words, तो आप उसको judge करते हैं. But a linguist doesn't do that. Like they are not judgmental. आप किसी को ये नहीं कह सकते कि language should be used in that way. Empirical study is the language is used and language is composed that way, language is formed that way, इसके ये components होते हैं, but you cannot dictate people, you cannot judge people that how language is spoken. ठीक है? So in other words, we can say that, okay, let me admit the students. Okay, they are joining very late. So what we can say that a linguist have a descriptive approach to language, not a prescriptive approach. Achha, now what is descriptive approach? That what people do with their language, all right, but we don't say and we don't mean to say that how should people or how people use language, उनको कैसे यूज करनी चाहिए और कैसे नहीं करनी चाहिए, all right, they how they should or shouldn't use the language, that's not our a link that is not what a linguist does. Yes, please, right. In linguistics, we can't say anyone that how you should. Yes, exactly. Yeah, you're right. You can't say that you should speak this way or that way because everybody has different context to speak. Everybody is an individual. Their thinking is different. Their mindset is different. Okay, their opinions can be different. All right, their selection of the words and the choices and the sentences that they choose to express themselves, this can be different, beta. वो different हो सकती हैं. आप लैंग्वेज को स्टडी करते हैं साइंटिफिकली कि लैंग्वेज इज दिस, ऑल राइट, दिस इज हाउ द सेंटेंसेस आर फॉर्म्ड, दिस इज हाउ द साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड, लेकिन आप लोगों को ये नहीं कर सकते, कह सकते कि दे शुड से दिस और दे शुडंट से दिस. तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है इसके अंदर, ऑल राइट. नाउ अगर हम थोड़ा सा और इसको फर्दर डिस्क्राइब कर दें डिस्क्रिप्टिव अप्रोच को, तो इट इज अ साइंटिफिक वे ऑफ थिंकिंग. लाइक think about think about a particular animal, all right, for example cow eats grass. ठीक है, आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ. किसी भी एनिमल को देख लें, वो एक स्पेसिफिक फूड खाता है. अब साइंटिस्ट ऑब्जर्व करते हैं कि पर्टिकुलर स्पीशी जो है वो प्लांट खाते हैं या लीव्स खाते हैं. ठीक है, नाउ यू आर नॉट गोइंग टू जज द एनिमल फॉर ईटिंग रॉन्ग, दे शुडंट ईट दिस, यू कांट से दैट काउ शुडंट ईट ग्रास, ऑलराइट. आप जजमेंटल नहीं हो सकते हैं, बट यू कैन टेल. अच्छा, अब आप उसमें स्टडी क्या करेंगे, यू कैन टेल that they had be they'd be more successful in life if only they eat this thing. No, आप ये नहीं कह सकते कि अगर cows जो है वो मीट खाना शुरू कर दें या ये करना शुरू कर दें और पर्टिकुलर एनिमल जो है वो ये खाना शुरू कर दे, so they can have a more successful life. You cannot say that, okay? But instead आप क्या कर सकते हैं, आप एक theory develop कर सकते हैं that why the animal eats this plant and not the other one. अब एनिमल्स जो हैं, अब देखें सम एनिमल्स हैव पर्टिकुलर फूड, ऑलराइट, तो आप ये स्टडी कंडक्ट कर सकते हैं दैट व्हाई दे ईट दिस पर्टिकुलर फूड